हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू यूट्यूब चैनल कैरियर कॉरिडोर क्लासेस। तो आज विषय है आमर आरएसटी मेन एग्जाम जहाँकि आपणकर जून मसरे होगा जाऊँगी तार पेडागोजी सबू स्ट्रीम जमीक टीजीटी आर्ट्स हो पीसीएम हो सीबीजेड प्रत्येक स्ट्रीम पेडागोजी क्लास आमर टार्गेट है पेडागोजी 20 ରୁ 20 रखा कहीं आमर गोटे गोटे मार्क भी आम इम्पोर्टाट एग्जाम क्वालिफाए होगापाई। तो आज यहाँ हूँ यूनिट ए रो चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस। आ पूर्वर 30टा क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कसन सरी यूनिट ए रो चैप्टर 1 रो एटा हूँ सेकेंड सीरीजटा सीरीज 2। तो एथिरे भी आज आम 30 क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो जो मैंने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करने सहित सांग मानू लाइक शेयर कर यूट्यूब चैनल कैरियर करियर क्लासेस को ता सहित डिस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छे आपने टेलीग्राम रे जॉइन होंदु जहाँफल कि टेलीग्राम रे आपण मैंने कौन ना नुआ नोटिफिकेशन पाइबा सहित आप जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन यूट्यूब रो नोटिफिकेशन ता सहित आपण मानक कौन ना आपणकर पढ़ा रिलेटेड पीडीएफ जोगाई दि जाव। ओके तो देख फास्ट क्वेश्चन आमर देला ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रिक्वायर्स द साइंस टीचर टू demonstrate the experiment stepwise and logically, plan real life problem based lesson integrated with multimedia, engage a lot of questioning and reinforce the student when they respond correctly, act as a facilitator and give students sample opportunity to manipulate hands on material. Okay. तो देख गोटे कंस्ट्रक्टिविटी क्लासरूम गोटे साइंस टीचर हिसाब से कौन दरकार मुझे तुमको कही ना ये क्लास टी सबू टीचर जिते भी आपण मैंने एग्जाम देवे पेडागोजी आपंकर सबू स्ट्रीम जमी टीजीटी आर्ट्स हो टीजीटी साइंस हो और टीजीटी सीबीजेड हो सीबीजेड पीसीएम आ आर्ट्स तीनटा जाकर पेडागोजी सामान सिलेबस तेणु क्वेश्चन यही टाइप क्वेश्चन तुम परीक्षा आसो। तार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर डी एक्ट एज ए फैसिलिटेटर and give student to sample opportunity to manipulate hands on a material. Okay, next question देखो the broader meaning of education includes all the experience and knowledge acquired through family and friends in an informal way, formal, informal and incidental learning, formal classroom learning, peer group discussion and sessions. से देला जे the broader meaning of education includes all the experience and knowledge acquired through क्या द्वारा हुए। तो यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर्मल इनफॉर्मल एंड इनसिडेंटल लर्निंग द्वारा होता है। ओके नेक्स्ट देखो अचीवेबिलिटी कम्युनिकेबल एंड मीनिंगफुल रियलिस्टिक एंड कंटिन्यूटी आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये सबू जाक कार कैरेक्टरिस्टिक्स ना बेसिक लर्निंग लेवल मिनिमम लर्निंग लेवल प्राइमरी लर्निंग लेवल आउ मैक्सिमम लर्निंग लेवल। तो ये सबू जाक हूँ कार पिले कैरेक्टरिस्टिक्स ना मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। तुम आउ गोटे क्वेश्चन आसो MLL रो फुल फॉर्म कौन तो मिनिमम लर्निंग लेवल बा मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। ओके MLL रो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट देखो ए टीचर नोटिस दैट सम स्टूडेंट इन द क्लास हैव एनेक्सिटी एंड फोबिया towards certain subject and this is the affecting their performance in the class. To remove this phobia, which of the following will be most useful? Classical conditioning, operant conditioning, Thorndike's law of learning और meaningful verbal learning। ना टीचर देखले जे तांग क्लास रे गोटे पिला कोन ना एनेक्सिटी आ फोबिया होची पढ़ा को लेके तो सेति में ए भितरु को लॉटा हमरो यूजफुल हबो। तार सठिक आंसर हला ऑप्शन नंबर ए क्लासिकल कंडीशनिंग ता होची कोन ना एथिपाई उपयुक्त रहिबो। नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू टू कंसीडर एजुकेशन एज ए प्रोडक्ट ना द एक्ट ऑफ डेवलपिंग द इंटेलेक्ट critical thinking abilities is involved in the process of learning. The learning involves social and cultural understanding and understanding of one's own self. The learning takes place throughout life which is an active and a dynamic process. The learner acquires knowledge, skills and values as outcomes of learning. तो सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर डी। ओके नेक्स्ट देखो ए स्टूडेंट while playing a game on the mobile phone
learns many new vocabulary words. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच काइंड ऑफ लर्निंग ना गोटे पिलाटे मोबाइल रे गेम खेलिकी बहुत गुड़ा भोकाबुलारी वार्ड जानूँ तो ये भितर कौटा हूँ तार एग्जाम्पल लर्निंग ना इंटेंशनल लर्निंग इनसीडेंटाल लर्निंग इनफॉर्मल लर्निंग आउ फॉर्मल लर्निंग तो यहाँ कौन हम आंसर ना आंसर है ऑप्शन नंबर बी इनसीडेंटाल लर्निंग ओके the continuance of a child is in a single class for 2 or 3 years due to failure is referred as wastage, stagnation, retention ଆଉ access। ता सठिक आंसर कौन हम ना सठिक आंसर हम stagnation ओके। नेक्स्ट देख द theory of operant conditioning focuses on the concept of conditioning which is brought about with the help of an operant. This theory was produced by propounded by Skinner, Pavlov, Thurstone and Thorndike. And the theory of operant conditioning focus on the concept of conditioning which is brought about with the help of an operant. तो operant conditioning theory किए कर देइछन्ति ना operant conditioning होछि हमरो Skinner ओके। नेक्स्ट देखो we would associate the principle of Ananda Yoga with which of the following philosopher। आनंद योगाटा आमर को फिलोसोफर द्वारा होइछि ना आंसर है टागोर ओके आंसर होछि कोन टागोर। नेक्स्ट देखो इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टू प्रमोट एक्टिव लर्निंग ए टीचर आस्क्स क्वेश्चन टू द स्टूडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टू प्रमोट एक्टिव लर्निंग पाई गोटे टीचर कौन कले क्वेश्चन पचारे छुआ मानू ए को टीचिंग रे जीवो है ना सोक्राटिक मेथड लेक्चर मेथड साइंटिफिक मेथड और प्ले वे मेथड तो आंसर होची सोक्राटिक मेथड ओके। नेक्स्ट देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस एंड कॉन्फ्लिक्ट इज एसोसिएटेड विथ रोजर्स पावलोव मास्लो आउ कट लुइन। द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस एंड कॉन्फ्लिक्ट किए कही ना कट लुइन्स ओके। नेक्स्ट देखो अकॉर्डिंग टू बर्नर which type of learning plays a crucial role in enhancing creativity of an individual? Child learning, active learning, service learning और discovery learning। बर्नर अनुसार प्ले क्रुशियल रोल ना आंसर हो डिस्कवरी लर्निंग ओके। द कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमा एंड एनिमस वाज गिवन बाय एटा देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे एनिमा और एनिमस कॉन्सेप्ट किए देछन एटा मन रखिबो तार आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्ल जंग एटा मन रख एनिमा और एनिमस। नेक्स्ट देखो हु गेव द आइडिया ऑफ आर्केटाइप्स व्हिच एग्जिस्ट इन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड इन्फ्लुएंस बिहेवियर। सिगमंड फ्रॉइड, अल्फ्रेड आडलर, कार्ल जंग आउ एरिक एरिक्सन। तार सठिक आंसर होची कार्ल जंग। कार्ल जंग ऊपर दुईटा क्वेश्चन आसला मन रख फास्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमा और एनिमस किए देले ना कार्ल जंग। नेक्स्ट पचारा हु गेव द आइडिया ऑफ आर्केटाइप व्हिच एग्जिस्ट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड इन्फ्लुएंस बिहेवियर होची मध्य कार्ल जंग ओके। नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसोसिएटिव लर्निंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी आ मॉन्टेसोरी मेथड। तार सठिक आंसर होची ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट देखो इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड to promote active learning a teacher asks questions to student during the course of teaching। एटा जस्ट टिके एपट सेपट कर देछि कथाटा को तार आंसर होछि ऑप्शन नंबर सी शॉर्टकटिंग मेथड। तुमका पूर्व क्वेश्चन टा टिके ठीक थिला एटा टिके बुले देछि सेम क्वेश्चन अछि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टू प्रमोट एक्टिव लर्निंग ए टीचर आस्क्स क्वेश्चन टू स्टूडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग एटा आउ टिके चेंज करछि एटा हला शॉर्टकटिंग मेथड ओके। नेक्स्ट देखो द राइज ऑफ मॉन्टेसोरी बेस्ड एजुकेशन हैज लेड टू द एडॉप्शन ऑफ कौन हम द राइज ऑफ मॉन्टेसोरी बेस्ड एजुकेशन हैज लेड टू द एडॉप्शन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, हैंड्स ऑन इंस्ट्रक्शन मेथड, टीचर सेंटर मेथड आ कोलैबोरेशन मेथड। तो सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी ओके। नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज वुड एप्रोप्रिएटली डिफाइनिंग लर्निंग। ए भितर कोटा होची लर्निंग को डिफाइन करूची जेमति कि क्रिएटिविटी कमा कन्विक्शन आ कमा एंडुरेंस तापर इंट्यूशन इंटेलिजेंसी आ इमेजिनेशन अंडरस्टैंडिंग इमेजिनेशन एंड स्किल्स
चेंज ऑफ बिहेवियर प्रैक्टिस आउ एक्सपीरियंस तार आंसर हम ऑप्शन नंबर डी ओके नेक्स्ट देखो हु स्पोक अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एथुर किए कहछन्ती लामार्क गाल्टन स्किनर आउ पावलव तो आंसर है लामार्क है इनहेरिट कर कौन एक्वायर्ड ट्रेट टू पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ओके नेक्स्ट देखो compensation and sublimation are two forms of defense mechanism conflict mechanism personality enhancement ଆଉ intelligence tests comprehension ଆଉ compensation ଆଉ sublimation ଏटा जा को फॉर्म होची ना डिफेंस मैकेनिज्म नेक्स्ट देखो according to socio-cultural theory of Vygotsky the child think in different domain does not take a complete perspectives. Culture and language plays a crucial role in the development. Children think in abstract or if presented abstract material at lower age, self-directed speech in the lowest stage of scaffold. According to socio-cultural theory, Vygotsky. कौन आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओके सोशियो कल्चरल ऊपर निहाती आसीबो कल्चरल नेक्स्ट देखो which of the following does not refers to Vygotsky theory of zone of proximal development এটা ভুল হয়ে যাইছিল এটা zone of proximal development ZPD the range of problem a child can solve if given some assistance children cognition remains limited by pre-operational mode of understanding children acquire cognitive structure from cultural and social interaction parent and teachers can foster cognitive development okay तो सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट देखो इन constructivist classroom as envisioned by Piaget and Vygotsky learning in dedicated by the teacher and the student are passive recipient of the same happens by pairing of stimulus and a response is offering of reinforcement by the teachers is constructed by the student themselves who plays an active role सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर डी ओके नेक्स्ट देखो which type of motivation is status of individual intrinsic extrinsic neutral और conditional कोटा मोटिवेशन इंडिविजुअल मानकर आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंट्रिंसिक ओके नेक्स्ट देखो इन ए मोटिवेटेड लर्निंग सिचुएशन the learner became interested to ask question memorize the lesson by cramming prepare himself for examination his memorization and forgetting became sequel कोटा हबो in motivation of learning situation to the learner answer है ऑप्शन नंबर ए became interested to ask the question next देखो which of the following cognitive constructivism does not depends on experience of the child inquisitiveness of the child environment of the child और concept of the child तो आंसर होची ऑप्शन नंबर ए एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड नेक्स्ट देखो which one is not an example of extrinsic motivation praise recognition prize और interest तो आंसर होची ऑप्शन नंबर डी इंटरेस्ट ओके नेक्स्ट देखो व्हाट इज कॉल्ड पेडागोजी में क्या कहबा ना साइंस ऑफ टीचिंग साइंस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग साइंस ऑफ लर्निंग साइंस ऑफ एजुकेशनल टेस्टिंग तो आंसर होची साइंस ऑफ टीचिंग जानी एटा समझते नेक्स्ट देखो which is not related with the objectives of motives to energize the behavior to stabilize the behavior to stimulate the behavior to active the behavior which is not related with the objective of motives motive रो कोटा ऑब्जेक्टिव नुहे तो आंसर है टू स्टेबलाइज द बिहेवियर नेक्स्ट देखो हु डिफाइन लर्निंग टू बी चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एटा किए कहछन्ती लर्निंग टू बी ए चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस किए कहछन्ती एटा तार आंसर है कॉर्न बीच ओके कॉर्न बाच एटा तार सठिक आंसर तो भिडियोटी जदि पिलामान तुम भल लागिला निहाती कैरियर कॉरिडोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिवो ता सहित तुमर क्वेश्चन MCQ सीरीज टोटाल RST मेन रो पेडागोजी रो सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा है जदि भिडियोटी भल लागिला तुम सांग मानू शेयर करो थैंक यू।
ओके।